People, if Table of Wisdom podcast has ever kept you company while you were driving, cooking, cleaning, or pretending to work, do us a small favor. Subscribe on YouTube and follow us on Instagram, Facebook, and Spotify. It's completely free, takes a few seconds, and honestly, it helps us keep these conversations going. Thank you for being here. Now, let's get to the wisdom. आपने लिखा कि when you are meeting someone whom you have never seen in a very long time, you are actually meeting two people, old version of you and new version of them. अपनी मुलाकात होके काफ़ी वक्त हुआ, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं अपन. What do you mean भाई? It's something like this where you're meeting somebody whom you've never seen in a very long time. उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. As in, say for example, I'll tell you one very interesting story. मेरे एक कोई neighbors थे when I was like 2-3 years old, ठीक है. जो सऊदी में रहते थे in Riyadh. तो मेरे पहले घर के जो neighbors थे, I have been in touch with them on Facebook for some time. After we moved from there and all. And internet का ज़माना जब अभी नया था, so we didn't have much consistent contact with them. And then it occurred to me that वो लोग भी हैदराबाद में रहते. And जो मेरे दोस्त भी है, जो मेरे neighbor भी थे, he was in Canada. And through some way I figured out कि he also was in Hyderabad for some time. Canada में he was working and then he came here for some vacation. And I texted him, bro, we've known each other for a very long time. हम लोग neighbors थे एक ज़माने में. Why don't we meet? It's been like 2.5 decades. Okay. So I was like, you know what? Let's not just meet. आप घर को ही आ जाओ. Okay. Parents would be very happy to see you. Like, okay, चलो ठीक है, जाके देख कर आएंगे, मिल कर आएंगे. What are they up to? How they are now? वगैरह करके. And this was that moment. And I will tell you, I'm an introvert. ऐसा दिख के आता कि मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, कैमरा फ्रेंडली हूँ and all. But if you expand the group and if you would put me there, I would be very silent sometimes. तो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था मेरे को कि अब मैं इनके घर को गया तो what will I even have to converse about? Because it's like 2.5 decades, not just 2-3 years. So when I went there, और जब मैं गया था और जब मैं एंटर हुआ उनके घर पे, I thought it would become awkward, but it didn't feel awkward at all. It didn't feel awkward at all because right after I entered the home, same faces थे. They did look old, but I could sense that their hearts were beating the same way as that last time के जैसा. We had a good chat. It was like 2 hours long. We had a lunch. We talked about different events in life that they missed on, I missed on. How my parents have been doing. मेरे parents भी आ सकते थे, but parents मेरे कर्नूल में रहते, so I happened to go alone. We talked about everything that the world has shaped us in, and then at some point, अंकल जब टेबल पे हम लोग लंच के साथ लंच कर रहे थे, अंकल भी यहीं बैठे हुए थे मेरे साथ. एंड ही वाज लाइक, देखो फुरखान, कभी भी आपको घर का खाना याद आया, आ जाओ, आप आ जाओ. टेंशन मत लो, आप ऐसा गेस्ट के वैसा ऐसा फील मत करो, आपका ही घर समझो. That was the most overwhelming feeling that I got at that time, and that was the moment I realized कि when you're going and meeting somebody, for me that is something that hit me so much like a nostalgia that I got the opportunity to meet that old version of me. Old version मतलब the 3-4-year-old Furkhan जो उनके घर को जाता था, शरारती वगैरह करता था and all. And that was the insight that came from that story. But the lesson that would also come out from the same story is that life may be like literally this short. ठीक है? But in that, if you expand, in that very short time, there are people whom you've never met in a very long time. Just go and meet them and see a whole different version of them while you're also meeting your old version of you. 100% sir, 100%. And you mentioned कि आप introvert है और आप कंटेंट क्रिएटर भी है. Agreed. वो कैसा मैनेज करें आप? वो फियर कैसा मैनेज करें? So there is a flawed perception about introversion actually. लोग ये समझते हैं introversion is something to do with shyness, something to do with never talking in crowds or showing so much passion or energy in social conversations.
But introversion is actually associated with how much social energy you preserve. I can talk at length if I want to, sitting on the rooftop with a friend, staring at the moon or clouds. But at the same time, I don't want to do that for very long hours. At some point, I'll be like, अब मेरे को घर जाना है, बस खत्म, ड्रेन हो गई मेरी एनर्जी. There is some explanation on YouTube that I saw. I don't remember which video that was. जो उन्हें बोल रहा था, introverts and extroverts are just like wired and wireless Xbox controllers. Wired controllers, they take energy from the source and they keep functioning. And that can keep going for on and on and on until like there is no end in sight. Wireless, like introverts are like wireless Xbox controllers. आप उसको एक टाइम पे चार्ज करते हैं, अब वो प्ले करो नहीं करो वो अपनी मर्जी है, लेकिन पूरा चार्ज होने के बाद यू स्टिल प्ले बट इट हैज अ लिमिटेड टाइम. So introversion is something like that. Even if you look at people like Bill Gates, Mark Zuckerberg, I don't know about Mark Zuckerberg, people like Steve Jobs, और अगर और अच्छे नाम वगैरह भी निकाल सकते हैं if you go look up. Yes. मीडिया के सामने नहीं आते उन्होंने. मोदी भाई इंट्रोवर्ट है. आई थिंक दैट दिस वे फुरखान भाई कि इंट्रोवर्ट है तो कितना इंट्रोवर्ट है और कितना एक्सट्रोवर्ट है. देयर इज नथिंग बाइनरी इन माय ओपिनियन. कि करेक्ट. अभी कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहता हूँ और कोई एक ऐसा ग्रुप है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ. तो इट डिपेंड्स ऑन माय एनवायरनमेंट आई वुड से, अगर मेरे सिचुएशन में. करेक्ट. अच्छा, एंड यू मेंशन अबाउट द नॉस्टैल्जिया, राइट? सो मेरे को वो आ रहा था दिमाग में. वी यूज्ड टू लिव इन अ प्लेस कॉल्ड होता सुदेर इन सऊदी रियाद. तो वहाँ पे रहा करते थे हम. अब मैं भी बहुत छोटा था तो कुछ धुंधले नज़ारे कुछ याद है मेरे को. और एक साल पहले मेरे को एक फ़ोटो दिखाई गई थी कि हम जिस घर में, बहुत पुरानी बात है भाई, वो बहुत पुरानी बात है कि कई साल पहले, कई डेकेड्स पहले की बात है. तो फ़ोटो दिखाई गई थी. तो वो फ़ोटो में जो घर में हम रहा करते थे वो घर टूट रहा था. तो वो फोटो आई थी हमारे पास कहीं से. कितना आई वाज लाइक, अरे इसमें तो बचपना गुजरा था हमारा. आई स्टिल रिमेंबर दोस कॉरिडोर्स में साइकिल चलाते थे, हल्लू छुप के जाके फ्रिज में से ठंडा पानी मैं नहीं पी सकता था. ठंडा पानी मेरे को परहेज था, मेरे को ज़रा सर्दी का इशू था, तो छुप के जाके पीना उसमें. तो वो सारी चीज़ें मैं वो फोटो दिखते कि एकदम सारे फ्लैशबैक्स आए मेरे को. सो इन अ वे इट्स, आई थिंक ये भी एक नया इंसाइट अब जो मैं बाद में ट्वीट करूंगा मैं. इट्स नॉट जस्ट meeting the people you've never seen in a long time, also the places, the pictures of them might also help you revisit. And also there's something about the plant there. वो एक ट्री था, ट्री क्या नहीं, क्लाइंबर था भी वो बेसिकली. वो क्लाइंबर जिस पे पिंक कलर के फूल रहते थे, वो फॉर सम वियर्ड रीजन वो इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में रह गया. वो अभी भी था जब घर टूट रहा था, वो मरने की कंडीशन में था, मगर अभी भी था वो जो छोटा क्लाइंबर मौजूद. तो did it remind you of your old version of you? It did. मैं भाग रहा हूँ. बालकनी में कैसा रहता था, लोहे के ग्रिल्स रहते थे, गोल रहते थे, उसमें मुंडी भी अटका लिया था एक बार. वो याद आया मेरे को. तो बहुत सारी चीज़ें बहुत तकलीफ से निकाले थे, फिर निकालने के बाद मारा भी पड़े थे. ये सब याद आ गया. It does. You are right about that. Correct. All right, moving forward. Another one. Sealed hearts are difficult to change. That's why it takes a heartbreak to open them. Okay. ये तो पूरा किस्सा सुनाना पड़ता. This is a very self-explanatory tweet. ऐसा नहीं है कि I personally experienced it, but it's that I've observed other people also struggling to change ऐसा. तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. It's like, you know, when you're dealing with some people, there are people who are also not very open to different ideas, different mindsets, different perspectives, and eventually at some point, even though you as a person may only respect that, you can only suggest what you want to suggest to them and they still don't take it, but you can't force that. I don't know, somewhere shayad God comes in, changes the picture. Maybe life comes in the way, there is an uncertainty comes into the mind, into the life, and then that person cannot do anything at all. If that person is somebody who is like very easy to accept everything that's happening to him, maybe he doesn't even have a sealed heart in the first place. But जिनके पास है वैसा, वो sealed इसलिए है क्योंकि maybe they had an expectation in, from their history or from the past, or they got too used to something
that they never kept their hearts open for a long time. And that's why I felt ki, you know, not that you should be the one forcing uncertainties, but at some point life throws uncertainties at them to the extent that it just breaks their heart for them to eventually open up. So yeah, that's Are you saying this from your personal experience, Furqan Saab? personal experience भी बोल If सकते हैं. yes, what was the story? Job rejections. What happened? देखो, फर्स्ट मैं कॉलेज में था, ठीक है, एंड मेरे बैकलॉग्स चल रहे थे, एंड बिकॉज मेरे बैकलॉग्स चल रहे थे, आई ऑल्सो वॉज फीलिंग डीमोटिवेटेड टू थिंक अबाउट करियर एज वेल, बिकॉज ग्रेजुएशन डिले हो रहा था मेरा, एंड एज मेरा ग्रेजुएशन डिले भी हो रहा था, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि अब दूसरे लोग डेलॉयट TCS में वगैरह चले जा रहे थे, क्लासमेट से शादियाँ भी कर लेके चले जा रहे थे और मैं यहाँ मेरे कोने पे अपने बेडरूम में अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करना. एंड FOMO. काइंड ऑफ फोमो बोल सकते हैं, बट दैट सेम ईयर आई वाज लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट यूट्यूब. आई वाज ट्राइंग टू मेक वीडियोस एंड ऑल. कहीं व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कहीं दोस्त वगैरह रॉन्ग एडवाइस दे रहे थे, आप मत जाओ इसमें, आप वो टॉपिक ट्राई करो, आप वो नीश फिगर आउट करो, आप कॉमेडी करो, व्हाट नॉट. रील्स आ गए थे, रील्स भी क्रिएट कर रहा हूँ, एंड देन इन द क्रिएशन ऑफ ऑल दोज रील्स स्टोरी टेलिंग एवॉल्व हो रही थी, एडिटिंग भी एवॉल्व हो रही थी. एंड इवन आफ्टर शिपिंग लाइक अबाउट 50-60 वीडियोज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, you also start noticing, like there are LinkedIn kholo वगैरह, and you'll find like your favorite creators are also actually companies themselves. You're applying to those companies, you're trying to shoot in your shot. There are also roles that are not looking for degrees, they are just looking for people who are good with their work. Like people are cutting to the chase. आज देखे आपका resume या work, tomorrow they are hiring you. It's not like 7-8 rounds of interviews and stuff. I'm like, oh, I'm lucky now. This is a really good field, it's evolving, let me apply. But जब मैं वो टाइम पे Nas Daily was not so much in controversy image, I was applying repetitively, cover letters, cold emails, different ways of, fulfilling their, what do you say, job forms. And then interview stage तक भी हमेशा जाता भी था. There was some Singaporean, there was some Malaysian who was interviewing me, and then 3 दिन के बाद वही same email आता था. Sorry, we had to move on with somebody else. Thank you so much for applying. And then at some point, I was like, you know what? I should keep making videos more and more. Maybe there is something inside me that needs shaping. वो टाइम पे थोड़ा sealed feel करता था मैं, but I didn't realize कि वो sealed heart है मेरे अंदर. I had to open up my scripts a lot over the coming years and make better videos, find out different places, and then Hyderabad को आना पड़ा. Hyderabad, I moved in for some other reason, which was content writer का एक role offer आया था कहीं से. I took that. But then I also was working with one incubation company, Adventure Park. उनके पास student startup stories है, but वो stories के आवाज़ नहीं थी किसी के पास. And I was like, मैं करके बताता हूँ. तो वो जब के फाउंडर जो महराज थे, I don't know, for some reason he said yes, maybe he could have rejected, but maybe क्या उतना स्पेशल नहीं था वो टाइम पे, and he just let me make the videos. First 3 videos कुछ बनाया, and at the same time Nas Academy, Nas Daily का जो स्कूल प्रोग्राम, they were announcing scholarships for their 5-month long creator program. Like चलो let's shoot our shot, and वो 3 videos में से एक वीडियो मैं सबमिट करा. They responded. They told me, we accept you. Come join us. We'll teach you content creation free of cost. Like, what the hell? What just happened? Kya hua abhi? What went wrong? And then when I looked at my videos back again to the first time I was making and the ones that I was making now, I realized there were a lot of things that I learned, like how to come up with hooks, how to establish a story, how to make people feel what they want to feel if they are a local audience. ये सब फिगर आउट करा, इसलिए व्यूज स्काई रॉकेट हुए, इसलिए कुछ कुछ जगह एंगेजमेंट स्पाइक हो रही थी, कुछ कुछ जगह शेयर्स ज़्यादा बढ़ रहे थे वो वीडियो के, एंड दैट बिकेम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर देम टू फाइनली एक्सेप्ट मी. खैर वो तो 2023 की बात है, बट आई एम ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. इट ऑल केम फ्रॉम हैविंग दैट minute heartbreaks and then open up into something. How was your life back in Kurnool, Furqan bhai?
लाइफ वाज जस्ट स्मॉल हम्बल, Mm-hmm. छोटा छोटा गांव छोटी सोच बोलते हैं ना, बस वैसे ही था मेरा. बिफोर कर्नूल आई वाज ऑलरेडी बॉर्न एंड रेस्ड इन सऊदी, रियाद. तो मेरा 3rd-4th ग्रेड तक आई वाज ऑलरेडी स्कूलिंग देयर, एंड देन उसके बाद पेरेंट्स हैड टू मूव टू इंडिया. तो कर्नूल वाज द आइडियल प्लेस फॉर माय पेरेंट्स टू गेट अस एजुकेटेड एंड even stay in the economic what do you say limits. So as a kid you won't realize what big cities offer to you in terms of shaping you in life, but Karnool was like thoda chota, 3-4 kilometers ke distance mein you'll find whatever you want to find, but very limiting, I would say. Limiting as in वो टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था मैं. जब मैं इंजीनियरिंग में आ रहा था, आई फिगर्ड कि इंजीनियरिंग बड़े शहर में करना, पढ़ाई बड़े शहर में इसलिए करना क्योंकि यू डोंट नो, यू कांट इवन एक्सप्लेन इट, बट देयर इज समथिंग और द अदर हैपनिंग फॉर पीपल. एंड इन सिटीज एज लार्ज एज हैदराबाद, विच आई जनरली वुड कॉल बिग सिटीज लाइक हैदराबाद, आर एक्चुअली लॉन्च पैड्स फॉर यू. हम लोग जो कर्नूल में रहते हैं, दे आर नॉट इवन लाइक लॉन्च पैड्स टू अस. Like even if you go back 10 years ago, कोई ना कोई वर्कशॉप चल रहा, कोई ना कोई हैकाथॉन चल रहा, कोई ना कोई पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन चल रहा आपके कॉलेज में, अगर आप इफ़ यू गो बैक एंड सी. बट कर्नूल में यू वोंट फाइंड ऑल ऑफ दैट. पढ़ाई घर घर पढ़ाई. So because of that, how people's perception about life is also becomes very limiting in their mind as well, because their definition of success will be the one that their parents gave them, the city around them gave them, and that is much different from the ones that you'll find in Hyderabad or a Bangalore or a Mumbai. So I knew that larger cities had something to offer. I couldn't tell it back then, but I just इतना मालूम था कि लिमिटिंग एक्सपीरियंस है, लिमिटेड माइंडसेट है, बस इसको फाइट करके निकलना है बस. I will never be able to I'm unable to understand what you are trying to say, Furqan bhai. See, Okay. maybe because मैं हैदराबाद में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मेरे को कदर नहीं मालूम हो रही शायद. राइट. आप मेरे को कॉन्ट्रास्ट ऐसा डिफरेंस बता सकते कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो कर्नूल में नहीं था. लॉन्च पैड आप वर्ड यूज करें, क्यों कर रहे हो? क्या आप कर्नूल में बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते? Did you read the book Where Do Good Ideas Come From? No. If you go back to that book, I don't remember, Steven कुछ नाम होगा शायद उनका. And in fact, I would recommend you to read the summary or listen to the audiobook, because very advanced words are used in that. What he mentions in that book is, if you'd look at a city that's like tier 2 or tier 3, and if you'd look at cities like tier 1, you would notice the pacing of innovation and creativity, general terms, innovation and creativity having a very stark difference between the two. In tier 3, it's much slower, but in tier 1 cities, it's much faster, because population कितनी है उस पर डिपेंड करता. तो population size रहने के वजह से distribution channels कितने होंगे उस पर डिपेंड करता. And because also of that, क्या वो शहर भी खुद opportunities दे रही या नहीं दे रही उस पर भी डिपेंड करता. Now Kurnool may only offer, say, some colleges and maybe now new cafes. Hyderabad is offering a lot more than that. Hyderabad is offering large companies, it's offering large opportunities in food spaces as well. Like, even if you look at somebody outside of Hyderabad and they'll be like, what do you think about Hyderabad? They'll say biryani. And it is a no surprise for anybody to think that Hyderabad is that food hotspot or something like that. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, फूड एज अ टॉपिक, बट द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इज जस्ट क्योंकि एक जगह मैटर कम है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड द collisions that happen in that place is very less, and it's just, it takes a lot of time for it to come to that place where Hyderabad में जितना अभी आज हो रहा. Now people who live in Hyderabad, they'll be like, अरे क्या है भाई, हैदराबाद में रह के वही सेम पिस्ता हाउस की हलीम, वही सेम मैक्स किचन की बिरयानी, and for them their version of I should live in a more ambitious state is like, let's go Canada, let's go Dubai, let's live in Bangalore, let's live in a completely new place. We are all starting from somewhere. मैं बस पीछे से स्टार्ट हुआ वैसा. अच्छा, राइट, आई गेट इट. सो अब वहाँ से क्या है, हर एक स्टेप आपके लिए एक अपग्रेड है. करेक्ट, राइट.
इट्स अ प्रिविलेज सर, इट्स अ प्रिविलेज बिकॉज आप करेक्ट में ग्रैटिट्यूड ज़्यादा रहता, आपको करेक्ट चीज़ों की कदर बहुत ज़्यादा रहती। करेक्ट एंड मे बी बिकॉज मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता, वहाँ पे ग्रोथ भी इतनी रैपिडली होती। बिल्कुल कर्नूल में शायद ये नहीं है, करनूल में नहीं है। कंपटीशन नहीं है उतना। अलग right? बात है इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड एन इन्फ्लुएंस अमॉन्ग अ स्मॉल पॉन्ड एज अ बिग फिश हाँ, अंधों में काना राजा। हाँ हाँ but I think you can only do that to some extent because there is not much enough audience that you'll find. If I were to speak from a content creator perspective, maybe I would do that someday when I go wide, because there are people generally coming up to me telling me आप करनूल को भी आओ, करनूल की भी ऑडियंस बनाओ, कुछ करनूल के लिए भी कंटेंट बनाओ करके। I'm like one day soon Yeah, soon yeah. for now let's stick to one niche. See, आपके पास एक बहुत अच्छा पर्पस है फरखान भाई, वो ये है कि अरे सी आई एम नॉट डिफाइनिंग योर पर्पस फॉर यू, मैं बस ऐसा सोच रहा हूँ कि अब आप ये सारी दुनिया देख लिए, आप वो भी दुनिया देखे, ये भी दुनिया देखे, नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप जैसा करनूल में रहा करते थे और जैसा डेस्परेटली कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे, नाउ यू कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। आई गेटिंग माय पॉइंट? कर सकते but it also appears to be that I am from just one domain. अब one domain can't offer the same opportunities to Karnool people because वो opportunity तो अब आ गई करनूल में। Instagrammers तो रेज हो रहे हैं Instagram पे like करनूल में। Like there are a few people who have come up and no people like Nas Daily, right, for example, उन्होंने एक ecosystem बनाए, फिर Correct. he invited you to be a part of it। तो आप भी कुछ आपका इकोसिस्टम बनाओ, करनूल के बच्चों को बुलाओ। इंशाल्लाह we'll find out. But coming back to the quote you mentioned, sir, हाँ उसमें क्या था वो, sealed hearts are difficult to change, that's why it takes a heart break to open them। मेरा किस्सा थोड़ा कुछ ऐसा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे को स्टोरी याद आ रही है वो कि आप खुश ना कहो, कुछ ऐसा नहीं है, रोमांटिक नहीं है। तो क्या था, I don't think I was a hero worshipper। ठीक है, काफ़ी टाइम तक मेरे दिमाग में कोई ऐसे पर्सनालिटीज़ थे जो कि इट्स लाइक इन्हों बात बोल दिए ख़त्म, इनकी बात फाइनल रहती है, इन्हों गलत बोल ही नहीं सकते इन्हों, क्योंकि इतने पहुँचे हुए आदमी है वगैरह वगैरह। तो देन one day I had a proof कि this guy is pretending to be somebody else। इन्हों behind the curtains कुछ बहुत अलग आदमी है। तो वो जब मेरे को मालूम हुआ कि ये आदमी कुछ और है और मैं कुछ और समझ रहा था इसको, दैट ब्रोक माई हार्ट, बिकॉज मैं पूरी शिद्दत से ये आदमी के रास्ते पे चलने के लिए तैयार था। आई वॉज गियरिंग माई सेल्फ अप। What was he? हाँ, What was he? स्कॉलर आई वुड से। Okay. ओके, स्कॉलर। तो ही वॉज एक्चुअली a businessman। Behind the curtains he was a good businessman, and लोगों के सामने ही वॉज अ प्रीटी गुड स्कॉलर। आई एम नॉट सेइंग कि ये दो कॉम्बिनेशन कोई बुरे हैं। Okay. मैं बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल बहुत गलत था। मतलब ही वॉज यूजिंग हिज ऑडियंस फॉर हिज बिजनेस एंड स्टफ। एंड आपका हार्ट ब्रेक क्यों हुआ? मेरा हार्ट ब्रेक इसलिए क्या, क्योंकि हम भी उनके फॉलोवर थे, ज़बरदस्त Okay. क्रेजी फॉलोवर थे हम भी, तो हार्ट ब्रेक हुआ। तो जब मेरे को समझ में आया कि अच्छा इतनी अच्छी नहीं है दुनिया इसमें, और वो अच्छा भी ये हुआ कि मेरे को एक लेंस मिल गई। Okay. अब मैं उससे देख सक रहा हूँ कि अच्छा कौन कौन सिमिलर ट्रेट्स है, किसके किसके पास सिमिलर ट्रेट्स। एंड देन आई अंडरस्टूड कि बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं। तो वो ट्रैप से बच गया मैं। इट टुक अ हार्ट ब्रेक फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बट आप इतने अटैच क्यों थे उसके लिए? अरे भाई अब देखिए, बचपन से हमारी ट्रेनिंग होके है ना भाई वैसी, कि अब आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सवाल नहीं पूछ सकते। हम भी वही एनवायरनमेंट में बड़े हुए, जब आप सवाल नहीं पूछ सकते इसलिए अटैच थे हम भी। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, इन्हों ऐसे है तो कई को है, कहता है इन्हों है ऐसे, अरे है तो क्या है भैया, हो हाथ मिलाए तो खुशबू आ रही हाथ में, ओहो हो इन्हों तो बहुत ब्लेस्ड आदमी है इन्हों। बाद में इतर हाथ में लगा, हाथ मिला आपके भी हाथ में, हाथ ही तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करते हैं चीज़ें। और क्या करते हैं ऐसा, अगर मैं बोल दिया तो मैं घर पे से उठा के लेके जाते लोग। जस्ट दैट आपको कुछ अटायर में भी आपके कुछ ऐसे बड़े चीज़ें पहनते हैं आप, यू अपीयर बिग, तो वो सामने वाले के एकदम इम्पैक्ट भी पड़ता है। अरे आदमी देखो कैसा खूबसूरत है, नूर है, कुछ तो बात है इसमें, कुछ
कुछ खुदा का हाथ है इसके ऊपर, हम्म। डिसीविंग रहता वो तो। करेक्ट करेक्ट। अभी देखिए आप, अगर वही एक क्राइटेरिया है कि नेक आदमी हमेशा हैंडसम गुड लुकिंग और ऐसा रहता, भाई कंगी शंगी करके अपन भी एसी वेसी में बैठे तो अपन भी अच्छे दिखते मुंह वूह धो के, तो दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। अब अपने पास ऐसा है कि नूर चरा है तो अच्छा है, तो या इट हैपेंड टू So मी। whose problem is it? The one who's making impression, yeah, the one who's getting the impression? आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट। मेरी गलती यह है कि मैं क्वेश्चन नहीं करा। लेटर आई रियलाइज्ड कि भाई सवाल पूछना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ट्रैपों में फंस जाते। अब गलती उनकी भी यह है कि ही नोइंगली वॉज डूइंग दैट। तो ये दोनों की भी गलती है। और सबसे बढ़ के शायद अपनी अगेन मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाह रहा हूँ अपनी शॉर्टकमिंग्स की वजह से, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ये जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इससे बहुत सारे लोग ट्रैप होते थे। इसका ट्रैप मैं भी हो गया था, ये चीज़ में ट्रैप। When you're working on something, whether it be self-development, whether it be a new startup business, or maybe it's a whole different trajectory in your career. आप finance में शायद थे कुछ वक्त तक, and then you're like, you know what? I'll shut this down. I'll start a podcast that will generate money for me. Some people will be upset. कितने लोग होंगे who would be having a lot of high hopes on you? ये बंदा एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनेगा, अरे ये बंदा रियल एस्टेट का बाप बनेगा, अरे फुरखान एक दिन ऐसे मुकाम पे आएगा जहाँ पे you know he will accept everyone's video resumes, and they'll be like, what the hell, I just heard Furkhan is doing podcasts and he's just done like 2-3 episodes. What a crappy episode the last third one was. But people will be upset. Yeah. And you really cannot do anything about it because people का काम ही है कहना, people का काम ही है एक type of impression बनाना, people का काम ही है आपके बारे में एक story बनाना उनके जहन में, which 90% is never true because stories are only created in their heads. But you should never consider them as barriers between you and your ambition. Reason is, और क्या ही कर सकते? Is there anything they can do? Are they having guns in their hands? चौक छोड़ा गोली मार देता हूँ। Are they seizing your car keys or something? कुछ भी नहीं कर रहे। No matter how much you try, they'll just keep blabbering in the hope that they feel in control to make you feel upset back. अगर आप वो नहीं ले रहे, you're defending yourself from that. Defending में नहीं, you're like emotionally secure enough to not even deal with it. Just move on. Just pursue whatever you wanted to pursue. At some point, they will slowly start turning into friends. Yeah, 100%. Upset ऐसा नहीं कि actively जाके upset करो लोगों को, but is that जब कुछ करना है, somebody is going to be disappointed. You have to live with it. That's part of the game. Prerequisite है वो. Even if I would explain it from a public speaking perspective, I used to also contest in speech contests. Toastmasters. And combination of my experience from both Toastmasters and content creation, what I've understood is the most powerful messages are the ones that gets to somebody instead of getting to everybody. Even in marketing terms, marketers, advertisers, they will also tell the same thing. If you are sharing a message and that message is meant for somebody, you don't have to worry about this message going to everybody. Because if that message was meant for everyone, then it's actually going to no one. So there will be people, even if something is not meant for them, they'll be upset. Arey, this brand has changed. Arey, they are turning into some different, what do you say? They are changing their direction. I don't know why this XYZ company is becoming a shoe brand or a car brand. They used to be a burger brand before. Netflix bhi to wahi tha. They were selling DVDs at one point. So yeah, so wahi hai. Like you'll have to disappoint people. The more you attach yourself towards an identity defined by a place, an action, an event, an era, or even a group, the more easier it gets to offend you, even if it's not specifically targeted at you. You'll find people around you who have very borrowed identities or living on borrowed opinions. Yeah. And that comes from a place where they cannot think for themselves. Notice the ones who cannot think for themselves are the ones who are borrowing opinions, right? Now imagine you
attacking something, not even attacking something, you're just like disagreeing with something that is borrowed for them. Now think of how they are so feeling, they're feeling at pain about it, but in fact it's not really, it doesn't have anything to do with it. Because वो तो borrowed है इतना पहले से, तो तुम्हारा था ही कहाँ पहले बात. For example, say for example, I don't know, Shah Rukh Khan lovers might hate me for this, but example दे रहा हूँ because there are people generally like that, and I'm sure that मेरे friends circle में तो ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है. If you are somebody who is like a pure die-hard Shah Rukh Khan fan, you will pick up something that is about Shah Rukh Khan. Maybe their hairstyle, maybe his hairstyle, maybe his way of talking, maybe his intellect, maybe his way of returning back witty jokes, counter jokes. अब कभी कभार ऐसा होता when you come to a place where you're disagreeing with that person. I don't like Shah Rukh Khan. He's doing very dumb movies. I don't know why he does all of that, but I don't see what's the business behind it. A person who will not feel offended by it is the one who knows that I like Shah Rukh Khan, but that doesn't matter to me because I'm not Shah Rukh Khan in the first place. But the ones who are offended, they'll be like, bro, कैसा बोल सकते तुम, कौन होते तुम, वो तो पहले तुम बोलो तुम कौन है. Because they have borrowed a part of him. करेक्ट. अगर शाहरुख खान को ब्लेम करें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो लोग पर्सनल ले रहे हैं अटैक. करेक्ट. मेरी थोड़ी आइडेंटिटी में जो बोरो करके हूँ उस पे अटैक हो रहा है. टुकड़ों की जो बोरोड आइडेंटिटी जो मैं खुद बना के रखा, फ्रैंकेस्टाइन ऑलरेडी टुकड़ों में है. हाँ. उसको भी आप अटैक करते क्या मेरे को ऐसा. मैं एक सिमिलर ट्वीट लिखा था. वो ये था कि kill independent thinking and you will be left with a world full of people who think, speak and act the same. Repeat. Kill independent thinking and you will be left with a world full of people who think, speak and act the same. Look at the world around us. Like हर के हाथ में social media है, हर के हाथ में phone है. So if you notice any average regular person का phone अगर आप खोलेंगे, उनका screen time देख लो आप. Forget about people who are going regular jobs वगैरह, but those who have their free time, 17, 18, 19 hours already. ये 17, 18, 19 hours पूरे दिन के कितना हुआ? बाकी के घंटे तो सिर्फ सोने में ही जा रहे हैं. If you count more 6, 19 plus 6 कितना हुआ? 19 plus 6, 15. 25. खैर 5 घंटों की नींद या मे बी नींद के बीच में कहीं फ़ोन चलाना और something like that. But it's crazy to look at how people are spending their time scrolling reels so much कि every content piece के बीच में even minute fraction centimeter का gap भी नहीं है. Think how much space of thinking people would have had अगर 2 reels के बीच में थोड़ा time wait time रहता था. I mean, of course, that has always been there for a very long time. TV भी हम लोग वगैरह remote से switch करते ही जा रहे थे out of boredom to see if there is something that will click with us. But look at the times when YouTube and other shows that we used to watch. We always waited, and in those wait time we always had something to think about. So today's world, why do you think they are not thinking for themselves? It's simply because they are just too occupied. They're just full of distractions. Agreed. And now this is the good talk. Having a crowd that is full of distractions and they don't have control on their focus is a much bigger advantage to those who really want to spread misinformation. And they'll keep doing that, and they'll keep weaponizing that to the extent that even if that misinformation spreads, they know that they can keep coming up with new content that will keep them from thinking. And that is a sad state that I would feel for people who do not think for themselves, and they should actually just like turn off their notifs or get out of their rut, so that at least sitting with yourself for 5 minutes will help you rediscover who you are. It won't be extraordinary. You are not Spider-Man, you're not Superman, but at some point you'll realize you are somebody who has to do something with your life. I think I agree with this statement when somebody said, nothing is original in this world. Agreed. Then सब जने फ्रैंकलिनस्टाइन ही बोलते ना उसको, टुकड़े टुकड़े जो जोड़ के एक रोबोट बन जाता, मॉन्स्टर बन जाता. Same, like and I don't think anything is wrong with that. It is not wrong with that.
again, back to that same book, Where Do Good Ideas Come From? Everything in this planet is actually a combination of one or two atoms, two or more atoms. Even atoms भी जुड़ के कुछ चीजें बन गए वो लोग. Correct. तो वो लोग, I mean, atoms. So it's more like it started somewhere. We started with basic things and then वो basic things को जोड़ के हम लोग और complex advanced चीजें बनाए. तो in a way I agree, nothing is really original. It's just a combination of originally नहीं, combination of previously formed things. आज देखो फूड का ही एग्जांपल ले लेंगे. पराठा बर्गर का कॉन्सेप्ट आ रहा. पराठा बर्गर, अच्छा. Have you heard of it? दुबई वायरल. ना भाई, अच्छा है मेरी पीठ अच्छी पाके भाई ये चीजों से नहीं देखना है मेरे को ये चीज. There are places who also offer paratha burger. I'm not saying bad or good about it, but it is some kind of a delicacy. हाँ, delicacy. एक क्रिएटिव आउटलेट बना किसी के लिए. अब वो एक at some point कैसा कहते बर्गर भी एक बन है और पराठा भी एक. Even I haven't tried it, but मैं देखा रील्स पे. डॉक्टर फूडी की भी एक रील थी. मे बी टाइगर लिली इज द प्लेस वेयर दे डू दैट, बट दुबई से स्टार्ट हुआ था समवेयर. कुनाफा चॉकलेट ऑल्सो अगर आप देखो, until before कुनाफा चॉकलेट there was only कुनाफा and only chocolate. मैगी जैम, किसान जैम. हाँ, थोड़े लोग खा रहे हैं. पानी डाल रहे हैं भगोने में, उसमें किसान जैम डाल रहे हैं, उसके अंदर मैगी बना रहे हैं, तो उसमें फिर थोड़ा मसाला भी डाल रहे हैं. तो अच्छा है वो भी. नहीं, वो तो क्रिंज कैटेगरी में आया, बट either way that's the same thing. Nothing is ever original. दुबई चॉकलेट, कुनाफा चॉकलेट is also, it was never original. कुनाफा था, चॉकलेट था, बस. Go back 10 years. Did we have a kunafa chocolate? No. It's Cadbury and कुछ इवॉल्व होते हुए आया होगा किसी से. Even if you look at cakes also, coffee flavor cake आ गया कुछ something. tiramisu, what do you say? I don't know. Like I'm a dumbo in all of this. But people know the names of cakes also. और वो cake है या नहीं, I don't know. People might hate me for this. But it's just like that. 10 years ago, it's like, I know a cake, I know a chocolate, I know an orange, I know an apple. People who think picking up hints from others is more important than having direct conversations. And generally, those who grew up in groups that dealt with insecurity and entitlement. नहीं समझ में आया मेरे को ये. ठीक है, work environments का एग्जांपल लेंगे. Work environment 1, it's a place where kind of your boss is toxic or the colleagues are toxic, or say there are things that are not supposed to be said verbally, are not supposed to be said in boardrooms, ऐसा कुछ रहता ना. That is one. And another work environment is something like this. You tell whatever the hell you want. We won't mind anything. We just know that we hired the right people who feel emotionally safe to say anything they want. Doesn't affect their career, doesn't affect their job, doesn't affect what they do in their free time, वगैरह वगैरह. I always tell the people who come from this type of group, they dealt with insecurity and entitlement. Because these are the people who are expecting others to read their signs. If they are angry, they are expecting their colleagues to read that. Why are we even having that kind of environment in the first place? आप इतने safe, secure person नहीं है जो आप आपका concern share नहीं कर सकते instead of showing signs of angriness? And can the colleagues also not feel safe about receiving that constructively and not take it to the heart but with a pinch of salt and then progress with the work? ये work environment में आने वाले लोग ही है जो who will realize कि I'm not here to deal with the bullshit bro. आप साइंस वगैरह मेरे को सेंड कर रहे हैं, I'm not here to read that. If it was really important, you'd bring it up to me. खत्म. If there is something to learn from it, I'll take it. Why waste time? अब now you see work environments में जो अब मैं जो explain कर रहा, you will see the same in other aspects of life as well. Even, you know, I've also heard of stories of people जो, what do you say, marriage proposals के time पे, prospects वगैरह share करने के time पे, when the families meet and when then they talk about लड़का अच्छा है, लड़की ये है, लड़का वहाँ पढ़ रहा, लड़की ये पढ़ रही वगैरह something, right? After that, after there is a yes between both the parties and then they eventually decide to get their kids married, why are people like sending signs to each other कि थोड़ा बड़ा शादी कर लेना था, something like that? I can't explain it better, but I've never lived that experience yet.
But it's some way it's very telling when you look at other people's marriage stories. Like अभी engagement भी नहीं हुआ और या maybe शादी होने वाली है. Some sort of a subtle sign is just thrown in the air, expecting that they pick it up. And society itself is training you to make that the normal, which I don't personally like. Tell it up in the air. If people are offended, they are responsible for their disappointments. हाँ, और एक tweet भी था ऐसा where I put it all together in one place. Healthy relationships are where you are responsible for your disappointment, they are responsible for their disappointment, not each other's. Oh, so good, साहब, so good. बहुत अच्छा है सही. I think डिवोर्स के भी जो केसेस आते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस ये भी हो सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे. बिल्कुल. It's just that we are expecting somebody else to understand what we are going through without even communicating what's happening. तो वो इशू है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है. जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं रहता, जहाँ पे वहाँ पे काम भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. कम्युनिकेशन जरूरी है. आई थिंक बिजनेस में भी ये बहुत ज़्यादा हो सकता है. बिल्कुल. अरे बिजनेस पार्टनरशिप्स, if there is always something to hide, there will always some sort of doubt that will keep lingering in the opposite person's mind. You should never put them in that situation ever. क्योंकि even थोड़ा सा भी doubt अगर उनके mind में आया because you are hiding something, then it will be like you're making him spend his energy in guessing what you're up to. Don't quit your job so you finally start your business. Start your business so you can finally quit your job. Job इतना भी secure नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, एटलीस्ट आज के हिसाब से. Because people think अगर आज मेरे को मेरी जॉब मिल गई तो then I am already secure. एटलीस्ट अगले 12 महीने तो मेरे सेट है. इफ आई एम गोना थिंक अबाउट एग्जिटिंग द कंपनी नेक्स्ट 12 months, चौथे महीने में अगर आपका ले ऑफ हुआ तो व्हाट आर यू गोना डू? So that is the mentality that you need to have first before even thinking about starting a new outlet. Reason being, अगर आप आज जॉब छोड़े, how sure are you that your new outlet, your new home business or your new content creation page is gonna give you the exact same returns monetarily as what you were making from your job regularly per month? Because it's just a hypothesis. You don't know how many failures it will take to go through that. अगर आप बात करेंगे भाई मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को जॉब छोड़ के करना पड़ता, मेरे को वो करना पड़ता, ये करना पड़ता, अब मैं जॉब में रहने की वजह से परस्यू नहीं कर सकता इसलिए छोड़ना पड़ा, समथिंग दिल कीप कमिंग अप विद दैट. आपका इंस्टाग्राम खोलो, एक्टिविटीज में जाओ, स्क्रॉलिंग आवर कितना हुआ आप चेक करो एक बार बोल के, आई विल जस्ट कीप कमिंग अप विद दैट. It will always be somewhere around 4-5 hours. And I'll be like, वो 4-5 hours आप spend करो कुछ और चीज में build करने के लिए. Right. Spend your weekends. How? Of course, like your social time will be cut, or some part of your transit time would be cut, or say तुम्हारा me time भी cut हो जाता. But at the end of the day, everybody in this world is getting the same 24 hours. किसी का 25, 27, 28 hours नहीं है. All it's just a matter of how you're using that time. You just have to keep, what do you say, attacking बोल सकते हैं, but I'm talking about the part where you are readjusting yourself to find that one eventual point where you'll be like, चलो मेरा business या मेरा content चल रहा, I'll leave the job. Only then you should be able to figure out कि you know अब मेरा career set है. And if like a good example would be when somebody is already in a space where they already have money ठीक है in their bank, they can of course leave the job. अब leave करने के बाद they may also like to take a break and that's totally fine, और वो break में भी they might be figuring out some stuff. But what if you are in that place जहाँ पे you don't have that financial strength, emergency funds ही नहीं है बैंक में, और अब 2 महीने गुजर गए and you're stuck on loans, अब बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, you'll regret that. So that's the whole point of that tweet. So what you are suggesting is जॉब करते हुए बिजनेस करो बोल रहे हैं आप. I started the same way. Okay. ठीक है, मैं जॉब करते करते बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में था, टेबल ऑफ विजडम सेटअप कर रहा था. I did that for 8 months, I guess. Yes, okay. Somewhere around 8 months. मैं किया वो.
वैसे 8-9 घंटे बोलते हैं अपने पास कि कॉर्पोरेट में 8-9 घंटे, वो कभी होते नहीं। 13-14 घंटे ऑन एन एवरेज, 12 घंटे तो कैसा भी रहते हो कॉर्पोरेट में। तो घर को आना, 3-4 घंटे की नींद, फिर उसके बाद यहीं पे काम करना कि कैसा करना है, क्या है, वगैरह वगैरह। इसके प्राइजेस मालूम कर रहे हैं, उसके प्राइजेस मालूम कर रहे हैं, सेकेंड हैंड मार्केट पे ये कितने पे मिल रहा, वो कितने में मिल रहा, पर्दे लगा तो ऐसा, कैमरा एंगल वैसा, वो ऑडियो यहाँ से आएंगी, वहाँ से आएंगी, वो ब्लॉक करना, अच्छा लाइट ब्लॉक करना, यहाँ पे लाइट लगाएंगे, 100 चीज़ें। ओके। एंड जब स्टार्ट करा मैं थोड़ा बहुत एपिसोड्स, आई थिंक आई वाज अबाउट 15 to 16 एपिसोड्स इन, ओके। आई मेड अ डिसीजन कि जॉब छोड़ना पड़ता, ये दोनों भी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। ओके। आई अंडरस्टूड कि इसको टाइम ज़्यादा देना ज़रूरी है। ओके। दो चीज़ें एक साथ नहीं करते थे, तो मैं सेविंग्स पहले से स्टार्ट करना शुरू, द डे 1 से मैं कॉर्पोरेट में सेविंग करना शुरू कर दिया था। राइट। एंड मैं ऐसा सेव कर रहा था कि मेरे को मालूम है अगर पैसे मेरे पास रहे तो मैं खर्चा कर देता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं है खुद पे, तो मैं मेरे दोस्त के पास रखा देता था। दोस्त क्या करते थे, स्टॉक मार्केट में डाल देते थे, उसको उन्होंने करते हैं, बेहतरीन आदमी है उन्होंने। तो वैसा क्या है, पैसे सेव होते गए मेरे, एक कुशन बन गया, मेरे फाइनेंशियल कुशन बन गया कि मैं इरादा ये कर लिया कि आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर मैं टेबल ऑफ विजडम फेल हो गया तो किसी भी वजह से। करेक्ट। और पैसे भी है, अगले 3 महीने का जितना भी खर्चा वर्चा हो सकता मैं उठा लूँगा, तो ऐसा कर लेंगे। तो इट वर्कड आउट फॉर मी। वो रिस्क जो गैम्बल था कि जॉब छोड़ा मैं, इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी। नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट स्टिल डज एग्जिस्ट, कि एक ऑप्शन है मेरे पास। अगर खुदा ना खासा कुछ भी हो गया था, आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माय कॉर्पोरेट वर्ल्ड, करेक्ट, वेयर आई वाज वर्किंग प्रीवियसली। एंड वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है भाई, कोई आई एम वेरी ग्रेटफुल, कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, वेरी गुड पीपल आई वर्कड विद। तो या एक गैम्बल, कैलकुलेटेड गैम्बल लेना ज़रूरी है। कैलकुलेटेड गैम्बल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलेट, मैं वही बोलता हूँ भाई, ये लोग, कई सारे लोग पूछते हैं कि कैसा करना भाई बिजनेस के, मेरा फुल टाइम जॉब चल रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिजनेस भी करना है, कैसा करना है। आई एम लाइक भाई हर एक मिनट दिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कैफिनेटेड रहना ज़रूरी है। जितना भी टाइम आपको मिल रहा जॉब के बाद, आपके डेस्क पे अगर आप किताब लिखना चाह रहे हैं, हर एक मिनट कैफिनेटेड रहना, आप इतना मेहनत करना कि आपकी ज़िंदगी इस पर डिपेंड है। वो हर एक मिनट को ऐसा इस्तेमाल करना, तब जाके कुछ हो सकता। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि सब चीज़ें ईजी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ईजी। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ के लिए मनी, टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आप नहीं करें वो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होता था। वो वैल्यूबल है ही नहीं। वो वैल्यूबल रीज़न, वो वैल्यूबल रहने की वजह ही यही है कि वो आसान नहीं है हर किसी का हासिल करना, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देना पड़ता, उसके बाद जाके वो चीज़ हासिल होती, इसीलिए वैल्यूबल है वो। बिल्कुल। The beginning part of it is actually for you to figure out how to run your setup. After a certain stage where you feel like now I can actually scale because there is a recurring income coming from it, then it's a time to, you know, move on from whatever you were committed to. फुल टाइम देने का टाइम आ गया। फुल टाइम देने का टाइम आ गया। तो लोगों का गलत डिसीजन ये है कि जॉब छोड़ के स्टार्टिंग से फुल टाइम करेंगे। यस आई एग्री। It doesn't matter if you if you achieve your first successful chapter of your business within first 6 months या 12 months या 1 year. What matters is you eventually finish that. एंड सबसे अच्छी बात क्या है मालूम इसकी फुरखान साहब, वो ये कि जब आप जॉब करते करते बिजनेस स्टार्ट कर लेते, आपको एक अच्छा एस्टिमेट आइडिया मिल जाता कि और कितना खर्चा होने वाला है। अब आपके पास एक जॉब है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इतने मंथ की सैलरी में से इतना अगर सेव करूंगा तो ये टाइम पे मैं क्विट कर सकता हूँ जॉब और फुल टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपके पास एक फ्यूचर प्रोजेक्शन आ जाता। करेक्ट। तो अगर लेकिन आप एकदम जॉब छोड़ के एकदम ऐसा बेट ले लेंगे तो या कैलकुलेटेड रहना जरूरी है उसमें। Most people fail not because they lack talent or opportunities. They fail because they don't put themselves out there in the numerous permissionless ways possible on the internet. You just need to discover how to do that. I cannot believe how many people do not realize that. Kyunki, you know, it's like if you're looking at an email box and you're looking to email somebody, आपके पास अनलिमिटेड वर्ड काउंट है, एंड वो अनलिमिटेड वर्ड काउंट का फायदा क्यों नहीं उठा रहे लोग, इज समथिंग आई कीप आस्किंग माई सेल्फ. The amount of ways, the millions of ways that you can express something about yourself, about your work, about your background, about anything that you do. If you just learn how to do that,
seriously आपको कोई ना कोई, even if you will not get the opportunity on the same day, you will get a response from somebody that will matter to you in your contact. That happened with me. अंकुर के साथ जो मेरा वर्क अपॉर्चुनिटी कैसा स्कोर हुआ, कैसा हुआ? 2022 में I was just putting out myself out there in terms of content, in terms of videos, in terms of scripts, in terms of storytelling. And I was like, now that I put myself out there, now let's redirect or direct it towards those who are looking for people like me. And I just tapped into Ankur's email. At the same time, I was also cold emailing few other leagues as well. My Captain था, Tag Mango था, Ankur था, Nas Daily था. Ankur का response आ गया था मेरे को. Why did Ankur respond to my email? It's a very simple reason. मैं अपना video डाला. I showed him this is how I edited it. Your Instagram Reels also needs edits. Let me know what you think. That's all that there was. Only after that response, now I knew what to do next. Keep answering his questions, keep providing more details, keep giving him more context about my history, about my profile. Even if I was still like a fresher kind of person. हुक तो कर दिए. हुक तो कर दिए. अब उसके आगे का भी और hospitality करो अपने messaging में. Don't put people in a situation where they have to decipher what kind of a person he is. He must be a good video editor. I have not seen his work yet, but I think I'll go talk. नहीं है वैसा. कोई भी नहीं कर रहा ऐसा. You show yourself so much that they're thinking to decision distance बहुत कम रहना है. 100%. For that, just give whatever you want. कुछ लोग बोलते हैं भाई वो बहुत काम है. Even job like work applications में भी अगर आप जाएंगे, there will be some places where they'll ask you for cover letters. रहता है optional for sure, but that is also a filter for those who are not. कौन एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाह रहे, कोई एक्स्ट्रा माइल जाना चाह रहे. करेक्ट. एंड जब मैं ये सजेशन देता हूँ मैं लोगों को, दे बी लाइक भाई व्हाई डू आई हैव टू डू दैट, डजंट दैट गिव मी अ साइन दैट आई एम desperate, or you know that also gives me a sign that the company is more like a dictator style type of manager. I'm like नहीं, उसमें फ़र्क ये है कि when you're giving yourself out there, you are painting the picture for them. आप उनका कोई काम खत्म करके नहीं दे रहे आप. That's all the difference there is. Even if you go out on social media, इतने सारे लोग हैं जिनके, even if you look at 60,000 following of yours, why do you even have 60,000 following? It's simply because you shipped videos almost every day. Yeah, at least every week. कितने लोग होंगे जो who might be knocking on your door asking for sponsorships and stuff, right? Yeah. Even if it might be still small, you're still getting, you know, those opportunities simply because you put yourself out there. Correct. Your style is podcasting. For me, it's informative videos. For somebody, it's comedy. For somebody, it's just random vlogs. And then just it's like you keep increasing the surface area of opportunities hitting at you. If you're not sending out your own self out in the world, then no matter how many abundant opportunities there are in this world, none will knock on your door. I think in most businesses and partnerships, fights happen not because of disagreements. They happen because some people feel uncomfortable about evolving with the business. Okay, take an example of two good friends who shake hands and say, let's start a business. Now, one friend is ambitious. The other friend, we just don't know yet. We'll find out. Not so much. Okay. So, as you keep working together, you're still in a scratchy business, right? Everything is still verbal, everything is still done on WhatsApp or, you know, in some way through some thick and thin. अब जब अगर business एक तरीके से establish होती, and then I don't know, just out of context I'm saying, कहीं ना कहीं contracts या कहीं ना कहीं paperworks आना शुरू हो जाते. If one friend is like, why do we need these contracts? We are already doing well with this, right? Now that will become a problem for the business itself. Because अब तुम लोगों की relationship on the business front from a scratchy phase was already going well. Until everything start to become so serious. अब जैसा seriousness वाला mode अगर आ गया, that is the real test of what really is the relationship about at some point. क्योंकि अगर वो evolution अगर आ रहा, now we have to adapt to the system. Now we have to adapt to all the, what do you say? Maybe formalities, correct. Formalities. If one person is like, no, I can't go this far. Like, khatam. Phir the relationship isn't evolving. It's not because I hate you or you hate me.
respect your decision. If you want to move on from here, you can feel free to move Yeah. on. I want to run this business लेकिन far. ये तो ज़रूरी है, ये तो बातचीत लिखाई पढ़ाई करना ज़रूरी है. Correct. If as long as the person is the founder. Yeah. हाँ. Yeah. 100% साहब, 100%. और किसी को इससे प्रॉब्लम भी हो रही लिखाई पढ़ाई से, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. इंटेंशन सही नहीं है. लिखाई पढ़ाई तो लिखना है, तो अगर कोई जिसकी नीयत सही है उन्हें बोलता अरे भाई लिखो भाई, मैं सिग्नेचर करता हूँ, बोलता हूँ. बिल्कुल. अगर उन्होंने बोल रहे यार कहीं को लिख रहे हैं क्या है बोले, तो फिर इसका मतलब इंटेंशन गड़बड़ है. वेरी लाइक पूरा पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं, या मे बी इट्स लाइक व्हाट यू से यू डोंट डू, बट व्हाट यू डू यू डोंट से, ऐसा. One of the biggest tragedies of Indian society is their inability to face uncomfortable questions because they mistake it for disrespect from people below their status. बड़ों से सवाल पूछे नहीं जाते, बड़ों को आप करेक्ट नहीं कर सकते, बड़े जो बात बोल दिए वो ही सदाकत है. And I was victim of that to some extent कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट थिंकिंग बंद हो जाती है. अब आप हर चीज़ को किसी दूसरों में तलाश करना शुरू करते. कोई सवाल आया तो आप दूसरों को अप्रोच करना इंस्टेड ऑफ थिंकिंग योरसेल्फ कि अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता. खुद की रिसर्च बंद हो जाती, दूसरों की रिसर्च पे डिपेंड होना पड़ता. तो आप एक तरीके से माजूर हो जाते. आपका एक लिम्ब कट जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिम्ब ऑफ योर बॉडी, दैट इज योर ह्यूमन ब्रेन. आप खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग बंद हो जाती. राइट. विक्टिम है अपन पूरे इंडियंस इसके. बिल्कुल. बट व्हाई डिड यू राइट दिस? बिकॉज देयर इज स्टिल अ लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हु स्टिल डजंट अंडरस्टैंड दैट. एंड समटाइम्स आई आल्सो राइट दीस ट्वीट्स आल्सो टू पुट इट अप ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस. ओके. किसको दिखाना है? किसी को भी नहीं. इट राइट ऑडियंस, राइट प्लेस. तो even sometimes there is like one friend of mine who is like such a uncle Buddha type status तुम डालते रहते हैं हमेशा. Like the type of content, type of audience भाई. Yeah. They're like, wouldn't you consider people like us? तो like you are just 1% बोला भाई. खैर वो तो अलग है वो scene. Yeah, but there is also one thing that I've noticed, and it is that जब भी ऐसा conversation करता हूँ, कभी Instagram Q&A में या when with people live, दे से हाउ ठीक है अपन बड़ों को भी करेक्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं, बट द ओनली वे टू अचीव दैट इज बाय थ्रोइंग टैंट्रम्स और बाय थ्रोइंग बचकानी जिद्दी हरकता. एंड आई फील बैड अबाउट दिस बिकॉज इवन दो आप यंग है एंड इवन दो आप वो टाइप ऑफ एज पे है जहाँ पे यू फील लाइक आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज स्टिल लाइक अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, नॉट एडल्ट रिलेशनशिप. I completely understand that you've never developed how to communicate what you want to communicate. But thinking that there is only one way to correct elders or there is only one way to ask questions to your elders, so you are doomed. Yeah. Respectfully भी हो सकता. Respectfully हो सकता, calmly हो सकता. There is also a time and place for it as well. Like say for example, अगर कुछ conversation मेरे को करना है about career change, that I'm switching my video editing to freelance वगैरह, I can't be texting on WhatsApp. आपको मालूम है माँ बाप को इज्जत तो देना ही है, बट डू इट इन अ प्लेस वेयर दे आर रिलैक्स्ड, दे आर सिटिंग, चाय बिस्किट वगैरह पी रहे असर के बाद, एंड आप भी पी रहे, आप भी आपका कप पियो, लाइक पकड़ो और बात करो वो टाइम पे. सो हियर्स द थिंग, वीडियो एडिटिंग नो लॉन्गर फुल टाइम, नाउ फ्रीलांस, कंटेंट क्रिएशन, फ्यू गिग्स हियर एंड देयर. व्हाट डू यू थिंक? ऐसे टाइम पे दे विल फील लाइक they are being told something. And वही मोमेंट पे there is all distractions away from you. Like फ़ोन बाजू है, उनका फ़ोन बाजू है, नमाज के लिए वेट कर रहे. एंड वैसे मोमेंट पे अगर आप बात करें तो there is like a lively conversation happening, right? Yeah. किचन, मम्मी किचन में पकाते रहते तो वहाँ पीछे से देखो मम्मी ऐसा है, देखो मम्मी ऐसा, उन्हें स्ट्रेस सिचुएशन में रहते ना, तो why go bother her at that time with your whatever ask or correction there is. 100%. बस that's मौका महल बोलते हैं इसको उर्दू में. मौका महल, एक राइट टाइम एट राइट प्लेस, राइट एनवायरनमेंट देख के उसमें बात करना. द वे आई डू दिस कन्वर्सेशन विद माई एल्डर्स इज दिस. आई पोलाइटली आस्क अ क्वेश्चन टू देम. Okay, I already know the answer, but I don't make them feel कि I know the answer. Okay, I just ask curious mind as a question. तो at the end of the conversation जवाब उनके खुद के मुंह से निकलता. तो दिस ऑलवेज अ विन विन फॉर मी. मेरे को जब पहुंचाना था पहुंचा दिया, अग्री भी हो गया. तो दिस ऑलवेज वर्क फॉर मी. दिस द वे आई डू.
बट इन अ वे इट्स टू से दैट जस्ट बिकॉज हाउ आई प्रपोज कि चाय जब पी रहे आपके फैमिली मेंबर्स एंड वही टाइम पे आप बात करें डजंट मीन दैट्स द ओनली वे, देयर स्टिल मिलियंस ऑफ रिस्पेक्टफुल वेज टू एक डू दैट. एग्जांपल दिया आप. हाँ. इनोवेशन जो इंडिया में नहीं है, जो भी यूएसए में होता थोड़े दिन के बाद वही इंडिया में दिखना शुरू होता. डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न जो हम क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी नहीं है, बड़ों से सवाल जो पूछे नहीं जाते, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है अपने पास, मे बी बिकॉज ऑफ दैट माइट बी द रीज़न कि अपने पास इनोवेशन भी नहीं है. व्हाट डू यू थिंक? Maybe I would say because I don't know if that has a direct relation with it. देयर इज, क्योंकि आप बचपन से वही कंडीशन में एनवायरनमेंट में बड़े होते हुए आ रहे कि आपकी सोच आपकी खुद की है ही नहीं. पास डाउन कोई जनरेशन टू जनरेशन वो बैगेज आप पे पास डाउन हुआ, आप खुद का सोच ही नहीं सक रहे हैं. इसकी वजह से आपके पास इनोवेशन भी नहीं है. फिर क्या हो रहा है, आप इनोवेशन जब नहीं कर सक रहे आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं. अच्छा लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, वो लोग आगे कर रहे हैं, अब मैं कैसे आगे बढ़ना, कॉपी कर लो. Agreed. Now I agree. If you're dealing with people who can't make decisions at all, I recommend reading Law 28 from 48 Laws of Power. क्या है वो? That's actually supposed to be corrected. वो law 31 रहना चाहिए था. Now exactly I don't remember, but the law is something like this: control people by giving or putting them into situations of choices. Say for example, आप एक work opportunity freelance gig में है, right? And then when you're working on this project with your client, it came to a point where you're now supposed to get the payment from them. अब वो तो डिस्कस हुआ नहीं कि कितने दिन में पेमेंट आने वाला है, क्या 15-day पेमेंट साइकिल है या 90-day पेमेंट साइकिल है, कब होने वाला नहीं मालूम. कब होने वाला है, यू आर नॉट श्योर. So you're like knocking on their door, कब होने वाला है पेमेंट, and they're like ghosting, they are not responding, they are explaining, अरे वो ऐसा है मेरा भाई हॉस्पिटल में है, समथिंग लाइक दैट. लॉ 31 अगर आप यूज़ करें, इफ़ दैट्स द राइट वन, इफ़ आई एम यूजिंग, अगर इफ़ यू वांट टू गेट योर पेमेंट, पुट देम इन अ सिचुएशन ऑफ चॉइसेस. यानी लुक ब्रदर, चॉइस 1, दिस इज द लास्ट डेट, जुलाई 31. जब तक आप पेमेंट प्रोसेस कर दीजिए प्लीज़, इफ़ यू कैन. इफ़ नॉट, देर इज़ अ 50% चार्ज ऑन इट if you're extending to 15 days more. If you're taking a bit longer, there is another 50% charge on it. Which one are you ready to go with? If you still are fine with going with that, I'm totally fine, for as long as you're paying me the other 50% as well. Yeah. People will be stuck in a situation where they can't do anything about it. Now they'll be like, हाँ आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं, आप कौन होते हो. People are actually afraid. जब पेमेंट देने से ही उन अगर हेसिटेट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नाउ इन देयर कोर्ट, पुट द चॉइसेस इन देयर कोर्ट. आई हैव वर्कड विद ऑल्सो सम ब्रांड्स, नाम नहीं लूँगा, वेयर दे वर लाइक, वी वांट द वीडियो टुमारो बट वील पे यू आफ्टर 30 days. आई एम लाइक ओके, 25K इज माई स्टैंडर्ड फी, आर यू ओके विद दैट? लाइक नहीं, कैन यू डू इट एट 20K? लाइक ठीक है, आई विल डू इट फॉर 20K. You want the video tomorrow? Give it to me tomorrow. Otherwise, 25K आपको जब देना है दे लो. Minimum 30 days वो आप बोल रहे हैं. I'm like, actually, you know what? I want the video not tomorrow, but today itself. You want the video today itself? Okay, 5,000 more. Yeah. Like, अरे आप ये क्या कर रहे हैं आप? भाई अगर आप हमारे टाइम एंड एनर्जी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट द मॉनेटरी वैल्यू दैट्स कमिंग विद इट. हम अपने कमिटमेंट्स छोड़ के आपके पास अर्जेंट बेसिस पे अगर आप बुला रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ प्राइस फॉर इट. इफ़ यू आर समबडी इज लाइक, अच्छा ठीक है कर लेंगे, अच्छा ठीक है हो जाएगा, अच्छा ठीक है कर लेंगे, दे विल ऑलवेज कीप एक्सप्लॉइटिंग मोर एंड मोर. एंड इट्स नॉट बिकॉज दे हैव एन ईविल माइंडसेट. हो भी सकता है या नहीं हो भी सकता, बट इन रियलिटी आप किसी से भी आप काम करो, दे विल कीप यूजिंग द फ्री स्पेस एंड टाइम फॉर एज लॉन्ग एज दे कीप आस्किंग फॉर इट, एंड यू कीप गिविंग दैट. वो जब भी स्टॉप होता जब आप खुद स्टॉप करते. I will never be able to understand how people operate like this. अगर मैं किसी के 100 रुपये बाकी हो तो रात में नींद में बेचैनी होती मेरे को, पैसे देना है इसके. ओके, वो लोग कैसा इतना आराम से, एंड आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट. Okay, so this is how it goes. You are in a place where you do want to return the money, but you're not returning it. Why? आप guilty भी है, लेकिन आप नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि you are feeling a bit safe about when the deadline is. अच्छा. So it's like you are
काइंड ऑफ देयर इज नो एक्चुअली लॉस इन इट. तुम कितना भी डिले करो, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. तो सेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस नहीं है बोल के आप यू स्टिल डीलिंग इट ऑन एंड ऑन. आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसे हुए हैं, because there is a fear of consequence, you know, there is a choice associated to it. I better make that. Let's return that 100 rupees. Yeah, 100% consequences रखना ज़रूरी है, बाउंड्रीज उठाना ज़रूरी है. बिल्कुल. ये लिमिट तक आप हम आपको ढील छोड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं. I'm so Even sorry. one another thing I discovered as a content creator, also just 3 days ago one brand reached out and was asking कि आप कितना चार्ज करते हैं. I'm like, the real estate brands were like 30K. Ad rights, sure, take it. You want raw video, sure, take it, fine. And they'll be like, can we negotiate? Can we come down to somewhere near 22, 25? I'm like, sure, we can do 25 if you're not giving me talking points. If you're fine with flexible deadlines, because I take time researching and understanding your project, because I'm not a personal user of it. Or something like, sure, I can do that, but will you help me with somebody who is a drone videographer from your end instead of me outsourcing that? So I just keep putting those choices in front of them so that they finally take that. Yeah, if they are like, no, can you do it 22K? So, okay, sure, 22K. How about no ad rights? I'll give the video, play wherever you want, but no ad rights. वैल्यू कम करते रहे आप जी. खत्म. बट आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लोग ब्रांड्स ये कैसा सोचते हैं कि हम स्क्रिप्ट देंगे ये क्रिएटर को और वो स्क्रिप्ट बोलेगा. क्रिएटर को आप पहली बार फर्स्ट प्लेस में आप पसंद ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ओरिजिनल उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पसंद आई आपको. अब आप उसकी वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट छीन लेके बोल रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट रीड करो, ये विल नोबडी इज गोइंग टू लाइक इट. Of course. क्यों नहीं समझ रहे? इतनी सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है ये, क्यों नहीं समझते होंगे लोग? Maybe it also has to do with something. It also something has to do with, say, the level of maturity they may have attained in the business after stepping into it. For some people, it's like already stepped into the water, so we know a bit about content creation, so we'll give the talking points. Yeah, maybe it's also for this reason. Some brands do want this particular sentence be told in a way so that multiple creators अगर कर रहे हैं तो उस same audience को वो recall value बार बार आते रहेंगे. That makes sense. हाँ. Perfect. So it all depends from brand to brand and how much mature they are and how well they know about the decisions they are making. Right. And sometimes वो majorly agency से आते हैं. तो brands are like, we don't want to deal with this creator dealership bullshit. We'll just hire an agency. अब agencies तुम ना क्या करते कर लो. अब agencies will not give from a brand's heart's perspective. They'll be like, brand दी करो काम. Robotic दिखता पूरा वो. Robotic दिखता वो, फिर उसको explain करने के लिए फिर agency will like, okay, I'll get back to you, I'll speak to the brand, and then उन्हें भी 2-3 दिन वगैरह लेना वो. I can never work with those kind of people, dude. You can if you're sure with how you deal with them. I just know that there is always best of both worlds. Yeah. No, मगर स्क्रिप्ट जो है अगर मेरे को कोई सामने से लाके दे रहा, I cannot do that. स्क्रिप्ट मेरी That's खुद for की sure. लिखना है, when I cannot For do me, that. it's like, if you're paying me what I ask for, sure, I'll do it. But अगर I'll be transparent to them कि देखो आप दे रहे हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, काम नहीं करती. काम नहीं करती. आप अगर उसके साथ चलना चाह रहे हैं, अवेयर है कि ये एंगेजमेंट रेट आने वाला है आपके पास, इट्स गोना बी लोअर देन 0.1 0.3%, I'll go with it. And you're paying me whatever you want. Yeah. Because at the end of the day, you have to deal with that choice. सही है. बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखा है फुरखान भाई आप मेरे को. क्योंकि अब कुछ लोग अब ये वीडियो देख के भी बोलेंगे कि अरे फुरखान पूरा मॉनिटरी हो गया, ही इज़ प्रमोटिंग ऑल स्पॉन्सर्ड एड्स, ही इज़ उन्हें झूठ बोल रहा पूरे एड्स में. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक आई एम डूइंग माई बेस्ट टू पुट दैट क्लाइंट इन अ सिचुएशन वेयर दे मेक द चॉइस दैट इज ईजियर फॉर मी एंड माई ऑडियंस. एंड इफ दे डोंट टेक इट, I can't help it. Yeah. I can't force them. Yeah. In business, you got to respect. लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इसमें क्रिएटर ऐसा नहीं है कि खुद का ही दोनों का फायदा होना ज़रूरी है. इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. करेक्ट. वो जब ही हो सकता जब आप क्रिएटर को क्रिएटर का काम करने दें और आप एज अ बिजनेस आप आपका काम करें. आप उसके काम में अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप उसको काम करने नहीं देंगे तो अब विन विन हो ही नहीं सकता. वो आपका ही नुकसान है अभी. तो आई थिंक दिस बट लेकिन अभी रिसेंटली थोड़े चेंजेस देखा मैं थोड़े ब्रांड्स में. लाइक भैया तुम्हारा आप ही करो, आप जो कर रहे हैं बोल के. लाइक ओके ठीक है. सो द नेक्स्ट वन,
the misconception that goes around in the career world is that smart and secure people are hard to find. I don't think that's true. They seem hard because we just don't give shots to new people. Rather, we keep giving shots to the same people who didn't meet our promises before. What do you mean? If you look at people who want to work with others, जब hiring वगैरह करते हैं, when it comes to onboarding somebody at the point of offering their letter या telling them कि you're hired, they are more inclined towards having somebody they know personally. Yeah, they have known for a very long time. एक familiar face है. People want to onboard. They're just looking for others who are familiar to them or like known personally to them. तो अब रैंडम कंपनीज की बात अगर करें, कुछ लोगों को जॉब्स इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि उनके कोई पहचानत के थे वहाँ पे. Valid, you got an opportunity, please take it, protect it, work on it. But what if that person hired you not because they know that you will grow or you will evolve or you will do the work diligently, but simply because आप helpless थे इसलिए हम help कर रहे हैं आपको. And when things may not work out, even for the good reasons, शायद alignments नहीं थे, शायद कंपनी जिधर जा रही आप उधर नहीं जाना चाह रहे, या शायद आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रहे, या शायद हायरर के लिए इट्स लाइक ही इज नॉट टेकिंग द फीडबैक द वे ही शुड बी टेकिंग. दे मे फील लाइक गिविंग इट अप, बट जब न्यू हायरिंग ओपन करना शुरू करते हैं, यू विल हियर ऑफन कि एक्चुअली हम लोगों को मिल रहे भी नहीं दूसरे एडिटर्स या दूसरे राइटर्स. दे विल कीप ऑनबोर्डिंग द सेम पर्सन बैक. You are not giving a shot to those who are already waiting for you in your cold email, like your email inboxes. कितने लोग खड़े हुए इधर रेज्यूमेस फेंक रहे हैं आपके ईमेल इनबॉक्स में. बात करो, पूछो उनसे सवाल, टेस्ट करो. If one person didn't work out, what's stopping you from trying somebody new? अब like नहीं, I don't know who they are. Yeah. That's the whole point. Find out करने के लिए तो उनला reach out करते हैं. 100%. Which is why you'll keep running on a scarcity mindset. There is not enough like smart people or happy people around me. You're not finding enough. About the reference thing, Furqan bhai, I hate references and stuff. Okay. तो I personally, मैं अगर किसी को reach out करना है, even though मेरे को मालूम है कोई link है मेरा, मैं जाता हूँ और खुद को प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि बिना रेफरेंस के मेरी जो ऑथेंटिक पर्सनालिटी है, अगर मैं उसके सामने लेके गया तो कैसा रिएक्ट कर रहा है, मेरे को वो देखना है. अच्छा. अब मैं रेफरेंस से अगर गया तो अच्छा ही ट्रीट करेंगे ना भाई. तो आई डो नॉट वांट दैट. आई एम लाइक अच्छा ठीक है, अगर मेरे को बाद में मालूम हो गया उनको कि अच्छा आप सो एंड सो के वो है ये है, या आप दोस्त है उनको पहचानते हैं, लाइक ओके. लेकिन फर्स्ट टाइम जब मिल रहे हैं, आई एम नेवर लाइक मेरे को रेफरेंस चाहिए ही नहीं किसी का भी. मैं रेफरेंस में बहुत उसमें यूज़ करता हूँ जब कुछ भी काम नहीं कर रहा तो चलो ये कर, लेकिन मैं पर हत्तल इनकम में खुद का पर्सनल रीच ही वो करता हूँ मैं. हाँ, दैट्स अ वैलिड पॉइंट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड. आपको रेफरल्स इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि it all goes back to the same point. The hirer is looking for a familiar face over talented face. So referrals work for as long as you know that the one who is hiring you because they saw your work before your face. 100%, 100%. फुरकान सर, अपनी कॉन्वर्जेशन आज रात तक भी ऐसे ही चलते रहेंगे, भी कंटिन्यू. बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फुरकान भाई. आई एम ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. मजा आया. People, if Table of Wisdom podcast has ever kept you company while you were driving, cooking, cleaning, or pretending to work, do us a small favor. Subscribe on YouTube and follow us on Instagram, Facebook, and Spotify. It's completely free, takes a few seconds, and honestly, it helps us keep these conversations going. Thank you for being here. Now, let's get to the wisdom.